morning, my dear students. Once again, Chitra Belwal welcomes you all to your English grammar class. So, my dear students, as you all know, nowadays we are doing the chapter lesson 1, that is the sentence, right? So, did you remember what is the definition of sentence? What is sentence? Yes, a group of words that make a complete sense is known as sentence, right? And I have also told you that there are total 4 type of sentence. That is, first one is assertive or declarative sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is imperative sentence. And the fourth one is exclamatory sentence. So I hope that you all must remember all the 4 type of sentences. So going on this series only, today we will learn something new about this topic. So my dear students, today we are going to study about different types of sentences. So do you know what are the different types of sentences? Yes, let me tell you, my dear students, there are total 3 type of sentences. That is, first one is simple sentence, second one is compound sentence, and the third one is complex sentence. So by these words only you can understand what's the meaning of these sentences. So let's understand these different types of sentences one by one. Okay. Now see, simple sentence. What is simple sentence? A simple sentence is an independent clause. A simple sentence is an independent clause. It has one subject and one predicate. It means, my dear students, that if the sentence is simple, अगर sentence simple, कौन सा sentence simple होगा? If it is having independent clause. Now you will ask, ma'am, what is independent clause? Independent clause means बेटा ऐसे group of words जिसमें एक subject हो और बाकी जो verb हो, but it makes complete sense, उनका कुछ complete sense बने, उनको किसी और की जरूरत ना बने अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझाने के लिए. ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स विच इज हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड विच डू नॉट नीड एनी अदर थिंग टू मेक कंप्लीट सेंस, जिसको किसी और की जरूरत ना पड़े, इंडिपेंडेंट हो, जो अपना काम खुद कर सके और जिसका प्रॉपर सेंस निकले. ओके, सो सिंपल सेंटेंस क्या होगा? जिसका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड in simple sentence it has only one subject. इसमें सिर्फ one subject होता है. Subject you know ना? Subject means about whom we are talking about. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा subject होता है. And what we are talking about the subject, हम subject के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो आपका क्या होता है? Predicate होता है. Got it? So let's understand this by example. First one, you can see that she cooks food. So in this sentence you are seeing that here you can see that she is a subject. She क्या है? Subject है and the rest part is predicate. Now अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप यू कैन सी दैट हियर इज वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है, बाकी यहाँ पे क्या है? वर्ब है. कुक्स फूड क्या है? आपका वर्ब है ना? कुक्स काम करना होता है, सो कुक्स फूड ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है. अगर हम इसमें केवल कुक्स फूड भी कहें तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट ये क्या है, इसका मतलब निकल रहा है. सो शी कुक्स फूड. अगर हम इफ आई से दैट शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, तो इससे वी कैन गेट ना कि इसका मतलब क्या है कि वो खाना बनाती है. सेंस निकल रहा है ना? इट डज नॉट नीड एनी अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू make a complete sense, right? So let's understand by a second example that Madhu plays the guitar. In this you can see that Madhu plays the guitar. इसमें Madhu क्या है आपका? Madhu is a subject and rest one is predicate. Okay, so it is making a proper sense.
without the help of any other sentence. ये proper sense बना रहा है, इसका कुछ मतलब निकाल रहा है that मधु plays guitar. मधु क्या करती है? गिटार बजाती है. So which is a independent clause which does not need any other sentence to make a complete sense. These type of sentences are known as simple sentence, and simple sentence it is having only one subject and one predicate. इसमें केवल one subject होता है, यहाँ पे one predicate होता है. यहाँ देख सकते हैं मधु में भी one subject है और बाकी ये क्या है? Predicate है. Nothing else we need for that. Okay. Now coming towards the compound sentence. Now by hearing the word compound sentence, you can understand that compound means two. Compound means two. When we add two sentences together so that it makes a complete sense, this is known as compound sentence, right? Now see the definition of compound sentence. If two clauses are joined together by a conjunction, it is known as compound sentence. It means, my dear students, that if two clause, अगर two clause दो sentences एक साथ join होते हैं and they are joined by the conjunction, वो conjunction के, did you remember what are conjunction? And, or, but, these all are conjunction. So when we add two clause, जब हम two clause को एक साथ join करते हैं by the conjunction, that is known as compound sentence, so that it can make a proper sense, right? So we will understand it with the help of example. Sheetal and Neena are cousin sisters. All right. Here you can see that, see here my dear students, that Sheetal is the name of a girl and Naina is the name of a girl. These two are subjects now. We are talking about Sheetal and Naina, right? हम शीतल और नैना के बारे में बात कर रहे हैं. तो शीतल और नैना हमारी क्या है? They both are subject and they are joined by the conjunction. ये किससे join हो रखे हैं? Conjunction से join हो रखे हैं, है ना? And yeah, here what you have learned, that if two clauses are joined together by the conjunction, it is known as compound sentence. And rest all is predicate. और बाकी क्या है आपका? Predicate है. Okay. When two clauses are joined by the conjunction, these type of sentences are known as compound sentences, right? Now see the second one. In this what you are seeing, that my son was playing cricket. मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है. So I went to the market. इसलिए मैं मार्केट चली गई. So here you are seeing that two sentences are joined by the conjunction and it is making a proper sense. Here you can see that these two sentences are joined by the so. ये हम किससे join कर रखा है? So से हमने join कर रखा है. So this is conjunction. ये क्या है आपका? Conjunction है. बाकी ये क्या है आपके? Two clauses है, right? I hope you have understood it well. Now coming towards a complex sentence. Complex sentence क्या होते हैं? Complex, जैसा कि आप समझ ही रहे, complex means कुछ थोड़ा सा complex, tough, mix up करके, right? So if there is one independent clause and one or more dependent clause in a sentence, it is called as complex sentence. It means, my dear students, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, अगर हम सिर्फ जिसके बारे में बात करें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाकी 2 or 3 डिपेंडेंट क्लॉज हैं, देन दिस टाइप ऑफ sentences are known as complex sentence. So understand it by this example, that you can earn money while you work. अब आप इसमें देख रहे हैं कि you can earn money, ये क्या है हमारा? You can earn money से हम समझ रहे हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं, right? So ये हमारा क्या है?
इंडिपेंडेंट क्लॉज है. क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. और जो सेकंड वन है while you work. अगर मैं कहूँ if I say that while you work, तो is it making a proper sense? ये कोई proper sense बना रहा है? while you work क्या समझ रहे हैं आप इससे? कुछ समझ रहे हैं? nothing ना. so while you work से हमें कोई proper sense नहीं नजर आ रहा है. और जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं that if there is here it is independent clause. यहाँ पे क्या है? independent clause है. right? so ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ये हमारा प्रॉपर सेंस निकाल रहा है. और जबकि ये कोई सेंस नहीं निकाला है, ये हमारे क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. राइट. नाउ सेकंड वन इज उज्जवल एट द मील दैट हिज मदर कुक्ड. राइट. इसमें क्या है? उज्जवल एट द मील. उज्जवल की मम्मा ने मील खाना पकाया. तो ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और जबकि दैट हिज मदर कुक्ड, इफ आई से दैट हिज मदर कुक्ड, सो इट इज मेकिंग अ प्रॉपर सेंस. कुछ बता रहे कि क्या इट इज डिपेंडेंट ना. ये जो सेकेंड सेंटेंस है इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन. सो दिस वन इज नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. So my dear student, these type of sentences are known as complex sentence. Now my dear students, let's do one new exercise and understand what are simple sentence, compound sentence and complex sentence. So we will do one exercise. So let's have a look over here. This is, all of you can open your book, exercise 1.2. In this, what you have to do, state whether these sentences are simple, compound or complex. So I have written different subjects. So here you have to tell whether it is simple sentence, compound sentence or complex sentence. Okay. So first one is, see here, I am elder to you. I am elder to you. In this, you can see that only one subject is there and one predicate. आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक subject और एक predicate है. यहाँ देखिए I am. We are talking about I am. This is your subject and rest all is your predicate. ये सब आपका क्या है? Predicate है. और we have also learned that a simple sentence is an independent clause. It has one subject and one predicate. So this one will be सिंपल सेंटेंस. ये कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस. गॉट इट? बिकॉज इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है और एक ही क्या है? प्रेडिकेट है. एंड इट इज मेकिंग अ प्रॉपर सेंस टू. ये प्रॉपर सेंस भी बना रहा है दैट आई एम एल्डर टू यू, कि मैं आपसे क्या हूँ? बड़ा हूँ. इट इज मेकिंग प्रॉपर सेंस. सो इट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस. राइट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, सुहेल एंड तारिक आर गुड फ्रेंड्स. सुहेल और तारिक क्या है? गुड फ्रेंड्स है. अब आप बेटा यहाँ पे यू आर सीइंग दैट टू सब्जेक्ट्स आर देयर. यहाँ पे टू सब्जेक्ट है. एक तो सुहेल सब्जेक्ट है, देन सेकंड क्या है आपका? तारिक भी क्या है? सब्जेक्ट है. एंड दीज टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड. ये किससे जॉइन है? एंड से जॉइन है विद द कंजक्शन. सो आई हैव टोल्ड यू दैट इफ सब्जेक्ट्स आर joined by the conjunction then it will be compound sentence. कौन से sentence होंगे? Compound sentence होंगे. So here you can see subject are joined by the conjunction and one predicate is there. So my dear students, this is known as compound sentence. This is known as compound sentence. Right? Now, coming towards the third one, Raman went to bed and sleep. Here you can see that we are talking about Raman and this is joined by and. These two sentences are joined by and. ये and conjunction से क्या है? Join है two sentences. So, if it is joined by conjunction, then it is known as compound sentence. Right? Now, dear students, see the fourth one. I stayed at home.
and completely completed my project. मैं घर में रुका and और मैंने अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया. सो इन दिस आई स्टेट एट होम, तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये आपका क्या है? आई स्टेट एट होम, मैं घर में रुका. इसका मतलब निकल रहा है, बट इसका कोई मतलब निकल रहा है. कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, इट इज इनकम्प्लीट. सो इट इज दिस टू सेंटेंस, टू क्लॉज आर जॉइंड बाय एंड. ये किससे जॉइन है? एंड से जॉइन है. सो इट विल ऑल्सो बी compound sentence. So dear students, wherever you find conjunction, you can assume that this is a compound sentence. Okay, now in fifth one you can see Jack was eating his food. So here we are talking about Jack. Jack क्या है? आपका सब्जेक्ट है और बाकी सब आपकी क्या है? इट इज नोन एज योर प्रेडिकेट. ये आपका क्या है? प्रेडिकेट है. सो here if you have one subject and one predicate, then it will be known as simple sentence. It will be known as simple sentence, right? Now see my dear students, see the sixth one. Mother came to your room. Mother came to your room when you were sleeping. अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आपको थोड़ा सा टफ है. That mother, we are talking about mother. हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं. That mother came to your room. ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, मदर मेरे कमरे में आई. अगर इफ आई से when you were sleeping, जब तुम सो रहे थे, अगर मैं कहूँ कि when you were sleeping, so it is making any sense? No, na. So to complete this clause you need the help of independent clause. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसमें डिपेंडेंट है. So then after that only it is making the proper sense. Then it will be known as complex sentence. If there is one independent clause, अगर एक ही independent clause हो, mother came to your room independent clause है, and one or more dependent clause, और अगर दूसरा dependent clause है पहले वाले में, then it is known as complex sentence, right? Now my dear students, see the seventh one. My father raised me to school today. Here we can see that one subject is there. We are talking about my father, so my father is a subject and rest all is your predicate. बाकी आपका क्या है? Predicate है. So if there is one subject and one predicate, it is known as simple sentence. इसको हम क्या कहेंगे? Simple sentence. क्योंकि it is making proper sense also without any adding any other thing. Okay. Now coming towards the last one. Hari has lost his wristwatch that father has gifted him. Here it is said that हरी ने अपने रिस्ट वॉच को लॉस कर दिया. हरी हैज लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच दैट हिज फादर हैड गिफ्टेड हिम, जो उसके फादर ने उसको गिफ्ट करी थी. सो हियर यू आर सीइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हरी. हरी हैज लॉस्ट हिज रिस्ट वॉच. सो दिस क्लॉज इज मेकिंग प्रॉपर सेंस. इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ तक. But if I say that father has gifted him, is it making proper sense? क्या ये proper sense बना रहा है? नहीं ना. So it is dependent clause. ये पहले वाले में क्या है? Depend है. Then only it is making a proper sense. So if one dependent clause is there and one or more if one independent clause is there and one or more dependent clause is there, then it is known as complex sentence. Right, my dear students? So my dear students, only one exercise we are discussing today. In tomorrow's Google Meet we will discuss the second exercise. So you please understand well what are the three different kinds of sentences. First one is
simple sentence, second one compound sentence, and third one is complex sentence. Please understand it well. Okay, and if there will be any doubt, you are very much free to call me anytime. Thank you and have a blessed day ahead.